नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आप ही के अपने चैनल असिडोस आशीष में। तो आज के इस कार्यक्रम में जो खबर है वो है इंडिया स्टैंड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13A इन श्रीलंका। तो 13A क्या है, आइए इसको जानते हैं। इन 1987 इंडिया एंड श्रीलंका साइंड एन अग्रीमेंट to implement the 13th Amendment of the Sri Lankan Constitution. According to the agreement, the Sri Lankan government will provide powers to the Tamil community in the country. Recently, External Affairs Minister Sri Jaishankar declared that India ponders the implementation of 13A critical. According to India, 13A is essential for the Sri Lankan government to reconcile with the Tamil community in the country. भारत का यह मानना है कि 13A का इम्प्लीमेंटेशन शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको वहाँ बसे हुए जो भी तमिल हैं, तमिलियंस हैं, उनकी कम्युनिटी से अगर आपको रिकंसाइल करना है तो ये श्रीलंकन गवर्नमेंट को कह दिया है। तो ये 13A क्या है? 13A इज द 13th अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने जाना। इट विल गिव मोर पावर टू द तमिल पीपल इन द कंट्री। Tamilians are the minority in the country of Sri Lanka. The Tamil community in the country is demanding a separate state. In 1987, with the Indian Union government's efforts, the Sri Lankan government agreed to increase the powers of Tamilians in the country through 13A. However, 13A was not implemented. सन 1987 में ये तय हुआ था कि तमिल पीपल जो भी हैं, तमिलियंस को उनको ज़्यादा पावर दिया जाएगा श्रीलंका में जो बसे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ। तो 13A की आवश्यकता क्यों पड़ी ये जानते हैं। द रूट कॉज ऑफ द इशू डेट्स बैक टू द ब्रिटिश रूल। During the British period, the Tamilians were powerful in the country. Tamilians constituted only 11% of the Sri Lankan population, and the Sinhalese constituted 11.2%. After the British left the island in 1948, the pattern started changing. चीज़ें तब्दील होने लगी जब ब्रिटिश वहाँ से चले गए। More Sinhalese were coming to power. Upcoming Sinhalese started disenfranchising the Tamilians. They started disenfranchising the Tamilians. उनका जो मताधिकार का एक पावर था वो भी छीन लिया गया। The right to vote ये किया गया। This led to the formation of the Liberation Tigers of Tamil Eelam, that is LTT 1976. Fights between LTT and the Sri Lankan government reached their peak in 1983. This is when India started interfering. And in 2009, the war ended with the Sri Lankan army killing the LTT leader. Though the war ended, the condition of Tamilians in the country has meagerly improved. They are still facing discrimination. This is why India is making statements yet again. तो ये चीज़ें होने के बाद भी अभी भी जो तमिलियंस का वहाँ उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो अभी थमा नहीं है, वो होता ही जा रहा है। तो इसी पे ये 13A के लिए जितनी जल्दी हो ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इस पे चर्चा हो रही है। अगली खबर क्या है? अगली खबर है कोल्लम हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। क्या है ये? आइए इस पे चर्चा करते हैं। In a historic achievement, the Indian district of
Kollam has become the country's first constitution literate district. The announcement was made by Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan. ये कोल्लम केरला का ही एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है. तो ये पहला, भारत का पहला, देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है कोल्लम. The district's success is the result of a 7-month campaign launched by the Kollam District Panchayat, District Planning Committee and the Kerala Institute of Local Administration, KILA, to educate citizens about the country's laws and their rights. अद्भुत है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन जो चलाया गया वो क्या था? द कैंपेन एम्ड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी टू 23 लाख सिटीजन्स बिलोंगिंग टू 7 लाख फैमिलीज इन द डिस्ट्रिक्ट्स. To achieve this goal, awareness classes were organized for around 90% of the people in Kollam. Around 16.3 lakh people above the age of 10 were educated by 2,200 trainers called senators who visited schools, offices, auto stands and tribal councils to create awareness. The constitutional literacy campaign in Kollam district is expected to help in a number of ways. By providing education about the country's laws and citizens' rights, the campaign aims to create a more informed and aware citizenry. This can lead to better understanding of one's rights and responsibilities as a citizen and can also help in holding the government accountable for its actions. It also helps the government's efforts to improve secularism and the social environment. Kollam, also known as Kulan, is an ancient port city located on the banks of the Ashtamudi Lake in Indian state of Kerala. ये पुराना पोर्ट सिटी है और अष्टमुड़ी लेक पे, उसके बैंक्स पे ये बसा हुआ है केरला स्टेट में. Kollam was once a major center of international trade, particularly in spices and cashew nuts, and was an important port for the Chinese, Arabs and Europeans. बहुत ही important पोर्ट था ये चाइनीज़, अरब्स और यूरोपियंस के लिए, और काफ़ी पुराने समय से है. The city is home to Thengassery Lighthouse, which is one of the oldest lighthouses in the country and offers a panoramic view of the city. Thengassery Lighthouse, one of the oldest है कंट्री का, वो कोल्लम में ही है. Kollam is also famous for its traditional Kerala-style houseboats known as Kettuvalams, which are used for backwater tourism. The city is known for its rich cultural heritage and is home to several ancient temples, churches and mosques. आपको बहुत ही पुराने temples, churches और mosque, मस्जिदें आपको यहाँ मिलेंगी. And it is rich in cultural heritage, including the famous Sri Mahaganapati Temple, Kaddakal Devi Temple and the Saint Thomas Orthodox Cathedral. ये सारे आपको कोल्लम में ही मिलेंगे. थॉमस ऑर्थोडॉक्स कैथीड्रल भी यहाँ पे है. तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा. आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.